They would come to me and speak about words like depression, anxiety, things like panic attacks. आप किसी से बात क्यों नहीं कर रहे हो? And the answer would always be कोई सुनता नहीं है हमको. तुम strong बनो, express मत करो, तुम रो मत, be a man, be a man. World Cup में इंडिया हार गया but पाकिस्तान को बीट कर दिया, then it's fine. It is that late night conversation I had with my friend. और हम लोग रात को 4 बजे तक ना बैठकर बातें की थी हम लोगों ने अपनी जिंदगी के बारे में ना. वो मेरी याद में अभी भी रहती है. नेट बकचोदी याद रहता है. नेट बकचोदी याद रहती है, राइट? दोस्ती ट्रॉमा एक्सचेंज हो गया. ये मेरी लाइफ में चल रहा है, तेरी लाइफ में चल रहा है. दोनों की लाइफ इज फक्ड बिकॉज आई एम अ वुमन. I don't get to go out much. I don't get to choose what I want to study. मुझे बोला जाता पढ़ाई मत करो, कुकिंग सीखो. मुझे बोलते जाता तुम्हारा कलर नहीं अच्छा है. मुझे बोला जाता तुम ओवरवेट हो, तुम ज़्यादा बात कर रही हो, तुम कम बात कर रही हो, तुम्हें लड़का कैसे मिलेगा. Welcome to one more episode of the LSM podcast. And today we've got a person who has probably spoken to the maximum number of young people across this country. We have Nikhil with us. Nikhil is the founder of Yuvaa, and you are probably also seeing his show, Be a Man, Yaar, which is a fantastic property that Nikhil has created. So from a guy who's spoken to kids across 150 campuses to running this massive platform where youth is connecting on a day-to-day basis, one of the champions of the mental health conversation in India, and also a great person who everybody seems to gravitate towards. So we have Nikhil today on the LSM podcast. Nikhil, welcome. Thank you, Harshil. This is such a kind introduction. Thank you for having me. I was telling you, it's such a calm space. You know, I'm really I'm gravitating towards the work that you are doing right now. Even the little bit we have spoken offline, I'm really keen and very excited about everything you're doing with Level Mind. So yeah. Thank you. So, Nikhil, today I want to delve a bit into 3-4 aspects, and the first one being more around your work around, youth. Yeah. 150 campuses. पहले तो आपने इतनी स्टैमिना कहाँ से निकाली आपने कि आप 150 कैंपस में चले गए और लोगों से अलग-अलग बातें और डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस कैसे हुआ ये सब? मेरी लाइफ एक्चुअली 2 पार्ट्स में है. एक मेरा वीकडे जॉब होता था विच इज़ इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. मैंने HT में, MTV में, यशराज फिल्म्स में काम किया हुआ है. पर वीकेंड्स में मैं पढ़ाता था स्टूडेंट्स को. फॉर 7 years आई वाज टीचिंग एट जय हिंद कॉलेज. While in the entertainment industry, I was responsible for making content for young people. जब मैं पढ़ाने जाता था कॉलेजेस के अंदर, मुझे एक पैराडॉक्स ऑलमोस्ट दिखने लग गया था कि जो ना we sit in glass cabins in Mumbai, Delhi, wherever, all these cosmopolitan, metropolitan cities, and we think we know what young people want. We assume basis anecdotal, या फिर मेरे nephew है, एक मेरी niece है, उनको देख के मैं बताता हूँ मेरी niece ऐसे सोचती है, that is what young people want. And the joke always was everything that we pitched, that was being pitched to us in the entertainment space was always in the space of 2 things. कि young लोग ना, according to writers in this country, young लोग one of 2 things करते हैं, या love या murder, which I was just like, there has to be more than that. Now, I used to love teaching. It's one of my favorite things in the world. And I would go to my classes and I think the one thing that I did which was slightly different, जो मुझे बाद में लगने लग गया था कि थोड़ा radical हो गया, कि where I was not trying to teach my students, I was also trying to learn from them. I was not only trying to talk to them, I was also trying to listen to them. And listening, I think, as a teacher, because मुझे लगता था growing up मुझे किसने सुना नहीं, और मुझे जितना समझ आता है अब आफ्टर मीटिंग ऑल ऑफ दीज यंग पीपल कि हमारी कंट्री में ना सब कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं बट सुनने वाले कोई है नहीं. तो एज अ टीचर व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग दैट स्पेस एंड गिविंग दैट स्पेस टू माय स्टूडेंट्स एंड सेइंग आई वांट टू लिसन टू यू. क्या सुना आपने? आई वाज इनिशियली सरप्राइज्ड दैट जितने मेरे क्लास में स्टूडेंट्स थे, आई थिंक बिकॉज ऑफ द एज डिफरेंस हमारा इतना ज़्यादा नहीं था, दे वुड कम टू मी एंड स्पीक अबाउट वर्ड्स लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, things like panic attacks. They would talk about even a lot more कि जो ना, not just
not just the fact that this was happening, but the reasons behind it also. So they would say something like, मेरी sexuality ये है, I'm facing a problem because of my gender, or I'm going through this because there is domestic violence at home, or I'm addicted to drugs. मतलब there could be so many different things which I was hearing, and I was just like, आप किसी से बात क्यों नहीं कर रहे हो? And the answer would always be, कोई सुनता नहीं है हमको. Whether it is teachers, whether it is parents, whether it is the system around them, and even for that matter, whether it is other young people. सब अपनी लाइफ में सबके साथ इतना सब कुछ चल रहा होता है. तो first you want to speak before you want to listen. And if everybody wants to speak, who will listen? And that was a problem that I was seeing everywhere. And I think that's where I recognized that this country needs listeners. This country needs people, who have empathy for each other. And as I tried to listen, and I tried to create what I later found out was safe spaces in my colleges. I started this project called the Kindness Project, जहाँ पर हम, at the end of the semester, सारे students ना, they would just speak up about their story behind the labels they have in life. It changed. It was life changing for me. I saw the power of empathy, the power of listening, and what is possible if we just break down our labels and look at each other as human beings. How does one be a good listener? What is it that is needed for somebody to be a good listener? तो हर्ष, मुझे लगता है ना, हम ना सुनते हैं सिर्फ रिस्पॉन्ड करने के लिए, राइट? आप कुछ बोल रहे हो, मेरे दिमाग में ऑलरेडी कुछ चल रहा है कि मैं आप जब खत्म करोगे तो मैं क्या बोलूँगा. दैट इज टिपिकल कॉन्वर्सेशन राइट नाउ, क्योंकि जो ना सब इतने बिजी हैं दुनिया के अंदर, सबके पास टाइम की कमी है. आई थिंक आप एक मेडिटेशन ऐप आप इसलिए लगा रहे हो, आप इसलिए आप यू आर वर्किंग ऑन मेडिटेशन ऐप बिकॉज आपको भी समझ आता है कि हमारे पूरी कंट्री के अंदर एक प्रोडक्टिविटी, और बिकॉज वी आर अ कंट्री दैट इज ऑलवेज एस्पायरिंग टू बी मोर, तो प्रोडक्टिविटी और हासिल को लेकर ना पूरी कंट्री में सब कोशिश कर रहे हैं कि ना मैं अपने हर एक सेकंड को इस तरीके से यूज करूं. एंड व्हेन दैट हैपेंस, आप कोई भी कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हो ना, इट्स ऑलमोस्ट विद द इंटेंट कि इससे या तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, या मुझे कुछ आई शुड लर्न समथिंग फ्रॉम इट, या फिर जो है ना आई शुड शो हाउ कूल आई एम. So at the end of the conversation, so before when someone's talking also in your mind, you're already thinking of a great reaction or a great response. But that's not listening. Listening is, again, to be mindful, to be present. आप कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, कुछ बता रहा है, आप सुनो. We don't even basic things like how are you, we don't ask people, with intent. Like I do this in client meetings sometimes, right? Like during COVID, and it was so, I don't know, both interesting and sad to me कि कोविड के टाइम पर हमारी क्लाइंट मीटिंग्स होती थी युवा की, एंड बिफोर वी गॉट इनटू बिजनेस आई वुड ऑलवेज बी टू द क्लाइंट कि हाउ आर यू डूइंग, एंड दे विल लाइक या इट्स इट इज व्हाट इट इज एंड व्हाटएवर, एंड देन आई वाज लाइक नो आई एम जेन्युइनली, आई वांट टू नो, इट्स अ वेरी टफ टाइम, आप यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई वांट टू नो, लेट्स टेक आउट 2 minutes, हाउ आर यू डूइंग. एंड दे वुड जस्ट गेट सो टेकन अबैक बिकॉज दे विल बी लाइक, यार हमारे ऑफिस में कोई नहीं पूछता, मेरा बॉस नहीं पूछता, मेरे घर पे ये बात नहीं हो रही, तो जस्ट कोई बोलना भी, हाँ यार इट्स टफ, इट्स अ टफ टाइम. दैट इन इटसेल्फ वुड जस्ट सडनली मेक us not people who are doing something transactional but something human, and that I think is very important. मेरा एक फॉलो अप है इसमें कि इट्स अ ट्रेंड कि लोग सोचते हैं नेक्स्ट क्या बोलना है. मोस्टली आई थिंक इट्स रूम में 10 लोग हैं तो 7 लोग वैसे. अगर इतना नेचुरल है कम सुनना ज़्यादा बोलना, क्यों है? मतलब क्यों ऐसा क्यों है? दैट इट्स कोर क्यों है? Yeah, but I think आयुष में वही जो बोल रहा था, I think सब कुछ ना कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, and I think एक ज़माने में ये नहीं होता था. I mean, I can't claim to have been from a different generation, but जो मैं अपने पेरेंट्स को से बात करता हूँ वगैरह वगैरह, या मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स, इनफैक्ट मोर देन दैट, दे वुड ऑलवेज टॉक अबाउट दिस कि हम लोग ना अखबार लेकर मोहल्ले में अपने 4 दोस्तों के साथ बैठते थे और जो ना गप्पे लड़ाते थे. Even now my the older folks in my family, they love meeting people and just for the sake of meeting people. There is no agenda. मुझे लगता है अभी जो ना हम लोग ना हर चीज़ से कोई एजेंडा ढूंढ रहे हैं, हर फ्रेंडशिप में एजेंडा ढूंढ रहे हैं. कि ना मुझे कोई, I hear young people saying something like this कि आई डोंट थिंक वो फ्रेंड ना अच्छा था क्योंकि जो है ना मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था. हर फ्रेंडशिप से सीखने को नहीं मिलता. कुछ फ्रेंडशिप में सिर्फ समटाइम्स यू आर जस्ट हैंगिंग आउट बिकॉज इट्स फन, समटाइम्स यू आर जस्ट हैंगिंग आउट बिकॉज यू बोथ आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग.
and it might even that matters. You know, some of my deep friendships aren't people that I've known the longest. It is people who understand what I may be going through at a very specific point in my life. I may not learn anything from them outside of that, but just कभी-कभी कोई साथ में होना as a support also is great यार. तो ये agenda जैसे हम agenda driven, you know, I think relationships. I think that's a little bit of a problem. इससे एक segue आ सकता है because agenda driven आप relationship तो बनाते नहीं हो, लेकिन आपके outcome relationship के बहुत बेहतर है. तो अगर कोई भी आपको जानता है और आपके इंस्टाग्राम पे देखेगा या मतलब जो भी आपको फॉलो करता है एक एंड एनीबडी हु विल स्पीक टू एनीबडी हु नोज यू दे विल हैव अ वेरी फॉन्ड थिंग टू से. और फिर मतलब आपकी जो रिलेशनशिप्स है इट वाज नॉट एजेंडा ड्रिवन बट यू हैव बिल्ट रिलेशनशिप विद सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल हु आर ड्राइविंग द नैरेटिव एज फार एज द वर्क यू आर डूइंग इज कंसर्न. तो उसमें से आपके लेसन्स क्या है, मतलब हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप्स विदाउट एजेंडा? Very good. Like CTAs, like if you have to give 5 CTAs, how to build friendship without agendas. I'm the worst person to ask, you know, कि मुझे 5 points में बताओ, because मुझे मैं ऐसे सोचता ही नहीं हूँ ना. Honestly, I don't think like this, and I can't. If you ask me like 4 things, 10 things, I don't know, because for me, I think again it all comes down to stories. It comes down to knowing that every human being has. आयुष, मुझे आपके बारे में शायद अभी पता कि आप IIT मद्रास से हो, कि आपने एक ना लेवल सुपरमाइंड ऐप आपने को-फाउंड किया है, and I can see what you're wearing, etc. And I have a certain idea. IIT Madras, matlab you must have, you know, studied engineering, etc., etc. Now everybody who's talking to you now, anybody else who's talking would have this limited information and would talk to you keeping that in mind. You know, I don't want to judge you for whatever you have. In fact, my first conversation with you would be just me asking so much more. कहाँ से हो, क्यों हो, क्या है, किस लिए engineering, क्या IIT मद्रास में आपका relationship कैसा था, etc. Not for any other reason, but because I want to know who you are beyond that label. आप beyond Level Supermind and beyond IIT मद्रास आप कौन हो यार इंसान, you know. And I want to get to the core of that because I think there is something very precious in human connection that comes from having something common. और वो मैं कॉमनैलिटी ढूंढने की कोशिश करता हूँ हर इंसान के अंदर. आई थिंक हम लोग जो ना अभी दुनिया में भी क्या प्रॉब्लम चल रही है, आप ना व्हेन यू लुक एट द वर्ल्ड राइट नाउ, इट्स सो डिवाइडेड इन सो मेनी डिफरेंट, एवरीबडी हैज ओपिनियंस, एवरीबडी इज एंग्री विद ईच अदर. और वो क्यों होता है? क्योंकि ना हम इंसानों को ना उनके ओपिनियंस से जोड़ लेते हैं और कहते हैं यही. I can talk to, you can bring somebody whose ideology does not match at all with mine, and I will have like a 2-hour deep conversation with that person, because I genuinely believe that beyond those opinions or ideologies are stories that I don't know anything about. There is a history, there is a childhood, there is trauma, there is joy जो मुझे कुछ नहीं पता और मैं जानना चाहता हूँ, because I think that's what, you know, makes us human. You know, we are the I think the species that has reached the top of the food chain, not because, you know, हम strongest animal है. अभी मतलब चूहा आ जाएगा मैं खुद घबरा जाऊँगा. You know, we are not because of the strong. I think it is because we have empathy. It is because we are able to understand each other. It is because we have compassion for each other. वो कहाँ से आता है? वो आता है एक human connection से, जो आती है stories exchange करने में, जो अब हम करने बंद कर दिया हमने, जो अब हम करते ही नहीं है, क्योंकि हम agendas में बात करते हैं, हम opinions में बात करते हैं, हम कहानियों में तो बात ही नहीं करते. और जब तक आप एक दूसरी कहानी नहीं जानोगे, आप bond कैसे बनाओगे यार? आप इंसानों को, and so any relationship I have, any, you know, I mean, even the term, the idea of networking, I don't get into any party, any you know, social event thinking कि I'm going to make friends with that person or so and so. I just go with curiosity. जो भी है, it could be the person who's the most successful, it could be the person I don't know at all who's struggling, and I would have the same conversation because I just want to know about their life, you know, and they would want to know about me. And I think that's where we find this commonality. कहानी exchange होती है, bond बन जाता है, and that bond I think people feel very, I also feel very grateful about. You know, you said one important thing. आपने कहा कि आज दुनिया में बहुत सारे बोलने वाले, सुनने वाले कम हैं, और ऑटोमेटिकली जब आप एक क्यूरियस सुनने वाले बन जाते हो, यू आर creating a space for yourself where the person has an innate need to be heard. Because they are not heard, they are really gratified every time you hear them with true intent.
and then they feel like, oh, now this is worth a relationship cultivating. So But मुझे लगता है हर्षल ये ना बेसिक है, ये ना इतना बेसिक, दिस इज ये सारी चीजें बहुत बेसिक है. मुझे भी कैसे जो ना पहुंच गए हम यहाँ पे, मतलब कि वही- बेसिक चीज भूल रहे हैं हम लोग. एग्जैक्टली वही तो बात है ना. एंड इज इट लाइक सिर्फ मुंबई में हो रहा है या टियर 2 में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है? हर जगह हो रहा है ना. ये हर जगह? मुझे यही लग रहा है. देखो आई फील अगेन, जो मैं गया हूँ अभी, नाउ आई हैव गॉन टू 150 campuses, I've been to 30 Indian cities, I've traveled a lot. We do something called the Yuvaa road show, जिसके थ्रू मैं for the last 4 years I've traveled extensively. 10,000 plus young लोगों को मैं मिलके मैंने उनको सुना है. And where I think of course एक रूटेडनेस ज़्यादा है टियर 2 cities के अंदर, कि वहाँ पर you will still see big groups of friends, वो एक रहता है जहाँ मुझे लगता है टियर 1 cities में तो बहुत ही कम हो चुका है, कि जहाँ पर everybody in tier 1 cities is looking out for themselves, whereas in tier 2 cities there's still some understanding कि we have to look after each other. बट वो भी मुझे लगता है अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, बिकॉज टियर 2 भी टियर 1 जैसा बनना कोशिश कर रहे हैं, टियर 1 कोशिश कर रहे हैं न्यूयॉर्क एंड लंदन जैसे बनना. एंड आई थिंक एवरीवेयर एक इंडिविजुअलिटी आ चुकी है, एंड एक हाइप बन चुका है कि इंडिविजुअलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कि आप अगर हर सेकंड अपने टाइम को प्रोडक्टिव नहीं बना रहे हो, अगर हर सेकंड आप कुछ नहीं ऐसा नहीं कर रहे हो जिससे आप बेहतर हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो आपकी लाइफ में कुछ मतलब ही नहीं है. एंड I have a lot of issues with that idea, because I feel like अगर आप जियोगे नहीं, अगर आप गलतियां नहीं करोगे, अगर आप एडवेंचर्स पे नहीं जाओगे, अगर हम if you don't take wrong decisions, if you don't not every second of your time needs to be productive. That unproductive time where you have done something that did not matter at that moment is probably going to help you maybe 10 years later, where you'll be like, यार वो जो मैंने गलती की थी ना, सबसे ज्यादा मुझे वहां से सीखा हूँ. या फिर वो जो टाइम मैंने अपने दोस्तों के साथ गुजारा था ना, आप अपने कॉलेज में, आप कॉलेज की बात भी सोच रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट I don't know about you, okay, but I'm also from engineering college. I obviously am not looking at the times where we killed at something together as my favorite time. It is that late night conversation I had with my friend. The पहली बात जब लाइट गई थी और हम लोग रात को 4 बजे तक ना बैठकर बातें की थी हम लोगों ने अपनी जिंदगी के बारे में ना, वो मेरी याद में अभी भी रहती है. नेट बकचोदी याद रहता है. नेट बकचोदी याद रहती है, right? Like those, because that's human connection. That is actually human connection, and of course you sometimes you work together, you win together, but when you fail together, when you struggle together, when you have those memories, I think they matter just as much. I'm not saying these things don't matter. Of course you should grow, you should do well, but take that time to be there for each other, and to be there for yourself. Wherein I think meditation also is a very big part of that, right? To be there for yourself, take care of yourself. See, there's a different perspective on the meditation side, slightly, because a lot of the research is showing कि लोग अगर meditation करते हैं तो इसमें 3-4 benefits आ जाते हैं. कि one is that आपका focus increase हो जाता है. Correct. आपका memory definitely increase हो जाता है. आपकी स्पीड ऑफ थिंकिंग इंक्रीज हो जाती है. करेक्ट. आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है. करेक्ट. एज अ रिजल्ट ऑल्सो आप थोड़े लेस सोशल बन जाते हो. वाओ. बिकॉज आप अपने आप से ज्यादा बिलोंग कर रहे हो, तो यू डोंट नीड द नीड टू बिलोंग. लेस सोशल, देयर इज नो पुल और पुश. मतलब देयर इज नो पुश अगेंस्ट सोशल और देयर इज नो पुल फॉर सोशल. या लाइक अ रॉक, लाइक गुड रॉक. बट व्हाट इज अल्टीमेटली कल्टिवेटेड is a need for service for everybody else. That's amazing, yeah. So वो भी एक aspect आ जाता है कि अगर आप फिर मतलब you are not trying to look at a relationship from the point of view कि मैं क्या निकाल सकता हूँ, but मैं क्या सर्व कर सकता हूँ. Absolutely. और अगर आप हर एक relationship में और हर एक action में कितना सर्व कर सकते हो, जैसे आप actually आप वही कर रहे हो in a way. जो भी मैं सुन रहा हूँ ना, आप हर एक relationship और हर एक action से आप मतलब एक आप सर्व ही कर रहे हो, बिकॉज आप सुन के भी सर्व कर रहे हो. और उसमें एक वो बहुत बड़ी चीज है. जैसे आप हर्षद आप बोल रहे हो ना कि मेडिटेशन अब जो मैं पंजाबी हूँ, मेरी मासी सत्संग जाती हैं और वह सत्संग में जाकर जो ना वो बहुत टाइम तक बैठती हैं बस गुरु ग्रंथ साहब जब पाठ हो रहे होते हैं वो सिर्फ सुन रही होती हैं. एंड आई थिंक वो भी एक मेडिटेशन है. और वो मेडिटेशन क्या है कि जो ना आप सबके साथ जब बैठ कर सुन रहे हो, दैट फीलिंग ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग इज ऑल्सो एज मच मेडिटेशन एज वेन यू लिसनिंग टू इट अलोन. So I think the idea of meditation, I find it beautiful, because I feel like it is getting to a state where you are at one with everything.
And I think that at one with everything, चाहे आप एक individual level पे करो जहाँ पर आप सुन रहे हो and you're listening to, you know, maybe some beautiful sayings by someone incredible that you've got on your app, or if it is, you know, going and listening to someone live, you know, it's as long as you feel like you belong to We have this very planet. beautiful Sikh-inspired meditation Yeah, coming to the app That's soon. beautiful, Series coming, yeah. so we will send it to you for sure. I want to, yeah, one of my things that I feel like जो मुझे अभी भी, I don't know, as I grow older, I just feel like I need a little bit, I want to, yeah, belong a little bit more to, you know, my roots. जो मुझे लगता है कि अभी हम लोग again एक urban culture में जब फंस जाते हैं, थोड़ा आपको लगता भूल है ये जाते हैं. बहुत हो रहा है जो आपने ये स्टेटमेंट एको किया ना, आई वांट टू बिलोंग टू माय रूट्स, कि यू नो आई वुड से फॉर एग्जांपल कि इफ आई टेक माय ओन एग्जांपल आल्सो, आई एम टुडे सिंस 2.5 years studying Bhagavad Gita Wow. religiously, then without using the word religion, but you know, I am studying it very deeply. I'm trying to connect to the essence of the scripture rather than the faith for the sake of the faith. And I'm curious about other faith. And like you said, this I want to connect to my roots. आप जब भी जा रहे हो across the country, are you seeing कि वो भी एक आ रहा है या फिर ये एक individual? No, I think कि जो ना with young people, I think ये उल्टा हो रहा है. I think young people, and that is, see, rootedness क्या होती है ना, rootedness बहुत तरीके की हो सकती है. Rootedness can also be, as I said, belonging to any part of your life, but wholly, you know, with all your heart. आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर आप रूटेड हो ना, वो भी एक बहुत बड़ी रूटेडनेस होती है जो बहुत कम लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री है. या फिर अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, अपने यू नो अपने काम के साथ, यू नो, जस्ट गिविंग योरसेल्फ विद लव. आई थिंक दैट्स व्हाट रूटेडनेस अकॉर्डिंग टू मी इज, यू नो. एंड आई एम एट दैट स्टेज वेयर आई फील लाइक मैंने हर जगह दे दी है, बट आई जस्ट फील लाइक मैं आई वांट टू गो बैक टू द बेसिक्स ऑल्सो, कि मेरे यू नो ancestors and you know what is that thinking that has existed for the longest time, just to understand it better, you know, कि can I use something from it, you know, because बाकी मैंने सब कर लिया. I think in my life right now there's lots that I have done and lots that I have given and received. So for me it comes down to, you know, कि मेरी, and this happened in COVID, I think, Harshil, मेरा ना, I felt a lack of, and COVID, I think a lot of people felt this, right? A lack of just belonging. Your identity became when you're alone at home and आसपास, you know, दुनिया में इतना सब कुछ चल रहा है. Everything comes back to who are you, what do I do outside of my work. Because सबके लिए ना, जब आप काम पे जाते हो ना, आपकी काम आइडेंटिटी बन जाती है कि मैं ये हूँ. आप इंजीनियर हो, you know, मैं मीडिया प्रोफेशनल हूँ, आप एंटरप्रेन्योर हो, whatever, you know, सबकी एक आइडेंटिटी बन जाती है और वही आइडेंटिटी रहती है. उसके अलावा then of course your relationships become your identity. You're a brother, you're a son, you're a father, etc, etc. But in COVID, when you were absolutely alone in your homes, you know, you were just like outside of these, you know, structures. मैं कौन हूँ? And when those questions started coming into everybody, some people again unfortunately went to the other extremes where they got angry about it, or maybe they took their identity very seriously. So there was a lot of anger on the internet कि ना मेरे बारे में ये नहीं हो रहा, मेरे बारे में वो नहीं हो रहा. Whereas a lot of people went internal. So we do researches at Yuvaa. It was incredible to see that post COVID जो हमने researches किए, young लोग बोल रहे हैं कि, you know, it's during the pandemic that everyone started saying that, you know, spirituality is important. इससे पहले ना spirituality की बात ही कोई, we done literally, when you look at our researches that we did in 2018-19 and immediately in 2021, and the big shift that had happened was, you know, कि I want, for a generation that has always loved being online, that has always loved, you know, being connected, suddenly everyone was talking about the importance of human connection, the importance of, you know, being one with everybody else. So I think that has been a essential shift, you know. कहीं ना कहीं obviously जब life की भागदौड़ में सब भूल जाते हैं, and that's where I think it's important to bring people back and get them to recognize that these are just as important, as much as your work, as much as, you know, the hustle that you're doing, the work that you're doing around you. It's very important to give time to yourself, to the people around you, to the community, to your parents. This is what I think, at least. What do you recommend, let's say, to a 25-30-year-old? How should he get more connected to the roots? How he can be more connected to the community? Yeah, I would just say, you know, being present is so important, right? What, again, I think even I'm 37 now,
and I feel like I'm also still trying to learn that. You know, how do we be present in everything we are doing? हमारा माइंड हमेशा जो है ना भागता रहता है ऑन द नेक्स्ट थिंग, एंड व्हेन यू आर यंग वो और भी ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि जो है ना वो देखो, यू नो, अगर मैंने if I'm present in the conversation right now, there is somebody else over there who is doing 40 other things and I'm being left behind. जो फोमो है वो बहुत रियल है एक्चुअली, बट एंड दैट फोमो इज नॉट जस्ट कि वो पार्टी में जा रहे हैं वगैरह वगैरह, उनकी लाइफ बेहतर हो रही है. आप देख रहे हो, जब मैं बड़ा हो रहा था मुझे यही लगता था कि हमारे ना क्लासरूम में ना 3 लोग थे जिससे, या फिर मेरी जिंदगी में 3 लोग थे जहाँ से मुझे कंपेयर किया जाता था. मेरी मदर बोलती थी कि क्लासरूम में ये लड़का है इससे बेटर करो, सोसाइटी में जो ना ये इंसान है इससे बेटर करो, और हमारी फैमिली में कजन है इससे बेटर करो. यू नो, ये 3 लोग होते थे कंपटीशन तुम्हारे. एंड यू आर लाइक इफ यू हैव डन दिस ना, जैसे वर्ल्ड कप में इंडिया हार गया बट पाकिस्तान को बीट कर दिया, देन इट्स फाइन. इट्स द सेम थिंग. यू हैव दीस 3 पीपल दैट यू नो इफ यू बीट देन इट्स ऑल गुड. But up now, the competition is not just 3 people, no. It's 3 million people on the internet. You're looking at everybody all the time. And forget your parents comparing, you are comparing. यार ये 23 हो रहा है, इसने तो गाड़ी खरीद ली, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ के अंदर. This person is younger than me. Look how many followers this person has. What am I doing? Look at this person who gets to go to a vacation so often. मैं यहाँ पर फंसा रहता हूँ. Now you obviously don't know anything of their life beyond these pictures. क्योंकि कोई डालता नहीं है बातें. कौन बोल रहा है कि जो है ना मैं आज मेरा दिल टूटा, या फिर जो है ना आई फेल्ड एट समथिंग, या मेरे को घर पे थप्पड़ पड़ा, ये कोई नहीं बोलता ना. तो ये जब कोई बोलता नहीं है, आप सिर्फ यू आर ओनली लुकिंग एट द बेस्ट पार्ट्स ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ एंड यू फील लाइक यू आर लेसर. एंड बिकॉज यू फील लाइक दैट्स वेयर यू नो यू स्टार्ट थिंकिंग कि एवरी मिनट ऑफ माई टाइम नीड्स टू बी यू नो प्रोडक्टिव. एंड आई फील इफ वी आर मोर प्रेजेंट in our lives, in our relationships, in our work, in for ourselves, I think as you said ना, वो focus ज़्यादा रहेगा. आप शायद you will probably be far more productive in your own way. But if you constantly look at everything around and constantly feel this need to prove something to yourself or to the world, that's where we are fault. I think वहाँ पर ना थोड़ा फंस गए हम लोग. वो ट्रिकी पॉइंट है. मान लो मुझे फोमो हो रहा है, ठीक है, मेरे को फोमो हो रहा है कि मेरे दोस्त पूरा वर्ल्ड टूर में अभी, लेट्स से, ठीक है. उस पॉइंट ऑफ फोमो पे, उस सेकेंड ऑफ 10 सेकेंड 20 सेकेंड जहाँ मेंटल फाइट चल रहा है, वो यहाँ जा रहे हो, हाउ कैन आई बी प्रेजेंट? वही तो बात है ना. आपको यही सबसे डिफिकल्ट बात तो यही है ना. इट हैपेंस विद मी आल्सो. मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ यंग लोगों के साथ हो रहा है. इनफैक्ट आई थिंक द इंटरनेट सोशल मीडिया की वजह से सबके साथ हो रहा है. मुझे भी ना, मैं अभी कभी जो ना व्हेन आई एम नॉट इन अ गुड फेज, एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना अपने कोई फ्रेंड्स ऐसे जगह ऐसे हैं जो बहुत अचीव कर रहे हैं, मैं उनको थोड़ी देर के लिए म्यूट पे डाल देता हूँ. मैं कहता हूँ कि यार अभी ना आई कांट सी समवन जस्ट कॉन्स्टेंटली डूइंग सो वेल, whereas I am not, you know, in the same place. मैं नहीं कर पा रहा. तो फिर कभी मिलता हूँ तो कहते हैं कि अरे लाइक अच्छा ये हो गया, एंड आई एम लाइक अच्छा मुझे तो पता नहीं था, लाइक व्हाई यू डोंट यू लुक एट माय स्टोरीज, एंड आई एम लाइक ओह शिट, मैं तो म्यूट किया था इस इंसान को, मैं भूल ही गया. तो वो वापस जाके म्यूट भी अनम्यूट भी करना होता है व्हेन यू आर इन अ बेटर प्लेस. बट आई थिंक दिस इज अ स्ट्रगल आई थिंक ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, एंड इट इज वेरी, देखो मुझे क्या लगता है ना आयुष, हम लोग ना वी आर द फर्स्ट जनरेशन दैट हैज, हमारे पास डिस्टेंस नहीं है सोशल मीडिया इंटरनेट से. हम पहली जनरेशन जो यहाँ पर इस पे बड़े हुए हैं. आप टीवी के जो ना पहले बैड इफेक्ट्स होते थे ना, जैसे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ना तुम इसको ज्यादा मत देखो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, क्योंकि एक डिस्टेंस आ चुका था. 20 साल से टीवी आया हुआ है, आप सबको पता चल गया कि टीवी के ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, यू नो. और विद एनी अदर डिवाइस, एनी अदर टेक्नोलॉजी, एनीथिंग दैट्स हैपेंड, एज सून एज यू हैव डिस्टेंस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स. वी डोंट हैव डिस्टेंस, एंड बिकॉज वी डोंट रिकॉग्नाइज कि कितना इंपॉर्टेंट है. आई वुड से एज एन एग्जाम्पल, या तो इसको यूज करो इन एन ऑथेंटिक वे. आप अगर आप बोल रहे हो कि मैं 4 चीजें मैंने अचीव की, ये भी बताओ कि 4 चीजें जहां मैं फेल हुआ, एंड दैट इज अ लिटिल बिट मोर ऑथेंटिक, बिकॉज यू आर नॉर्मलाइजिंग फेलियर ऑल्सो, जो हम करते नहीं है. सक्सेस को हम पूरा टाइम हाइप करते हैं, फेलियर के बारे में बात ही नहीं करते. एंड आई थिंक दैट, एंड एक आइडिया क्रिएट हो जाता है यंग लोगों के दिमाग में, विच आई एम सीइंग सो ऑफन. कॉर्पोरेट्स आर फाइंडिंग इट टफ एट दिस पॉइंट टू रिटेन यंग पीपल. वो कहते हैं कि हमारे जो ना यंग लोग आकर जो ना पहले तो 6-6 साल 10-10 साल काम करते थे, 6-6 महीने में लोग छोड़ के चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो ना हमने, अगर अब मैं शबांग में आप काम कर रहे हैं या मैं युवा में काम कर रहा हूँ, हम लोग जो ना डाल रहे हैं कि देखो कितना मजा आया युवा के अंदर, कितना मजा आ रहा है. यू पुट द पार्टीज, यू पुट द ग्रेट स्टफ, यू पुट ऑल द कूल थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड पीपल आर सीइंग एंड सेइंग मुझे तो यहाँ पर काम करना है. अब उसमें ये नहीं दिख रहा कि जो ना हमने कितनी लेट नाइट्स डाली हैं, ये नहीं दिख रहा कि बहुत फेलियर्स भी हुए हैं, ये नहीं दिख रहा कि देयर आर फॉर एवरी ग्रेट सक्सेस देयर आर 10 times दैट इट डजंट वर्क आउट. वो कौन डाल रहा है? एंड इफ यू आर नॉट पुटिंग दैट आउट,
people are getting this idea, young people in particular, कि यही है जिंदगी में बहुत enjoyment होता है, सब enjoy कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा. और वो एक compound होता रहता है over the years कि यार काम पे भी सब कर रहे हैं, कॉलेज में भी कर रहे थे, यहाँ पर भी कर रहे थे, why am I the one who's not doing it? And we need to break that pattern. So we need to have more conversations about this. We need to try very hard. Again, I think meditation is a fantastic way of trying to be more present. Like the most, for me, the biggest effort that I put in my life is कि मेरे दिमाग में ना 500 चीज़ें हमेशा होती हैं, but if I'm having this conversation right now, I need to be in this conversation. If I'm meeting somebody for 5 minutes, मैं 5 मिनट किसी से बात कर रहा हूँ ना, मैं genuinely feel करूँगा. I don't want to do it while I'm 40 other things that are happening in my life. इसीलिए ऐप में हम लोग ने क्या किया, अलाइनमेंट के लिए, जो भी आप बोल रहे हैं ना, प्रेजेंट में आने के लिए, वी थॉट कि कौन सी चीज़ें हैं. तो एक तो मेडिटेशन है, सेकंड इज कि आप दिन में जा रहे हो और इन द मिडल आपको एक वेरियस, आई थिंक 20-25 different kinds of breath work we have. If your body is well rested with sleep, then you will be more likely to be more present. So we have sleep, और specifically हम लोग ने योग निद्रा पे काफ़ी एक रिसर्च किया और काम किया, और अलग अलग टाइप की योग निद्रा डाले ऐप में. थर्ड इज़ माइंड मसल वर्कआउट्स. तो अगर आप आपके बॉडी को अलाइन रखते हो तो आपका माइंड भी अलाइंड होगा, बिकॉज जैसे 8 limbs ऑफ योगा में है, यम नियम आसन. आसन इज अ थर्ड limb. So why you work out? Because workout is also part of aligning mind. Correct. And then journaling. Because if I am able to ask myself the right questions, I'm able to bring myself back. Okay, be present. तो वैसे मतलब प्रोडक्ट को ऐसे स्ट्रक्चर किया और उसको एक जेनजी बेस्ड सोशल मीडिया फ्रेंडली फॉर्मेट में विद गेमिफिकेशन विद पॉइंट्स, तो आपको डोपामिन हिट्स भी मिल ही जाएंगे. नहीं यार, इम्पोर्टेंट है. आई थिंक अभी टेक्नोलॉजी तो है ही हर जगह, and it is what it is, and we now need to figure out how do we use it for good. Yeah, how do we use it to make sure that we are also having these kind of conversations, using it for, as you said, good, as much as it is being used just socially, or I would say to make the world a little worse right now. Net practice presence, and Level Supermind is a good place to practice presence, and it will automatically flow in rest part of your life. Like, because I think आप लोग जो कर रहे हो वो एक structure दे रहे हो इस idea को, as I think as folks who may not be as advanced in that understanding of meditation, or I consider myself obviously not as advanced as you, and I think for the rest of us एक constant struggle है, even कि मैं कितना time दूँ ऐसे ऐप को, वो भी एक struggle है कि मेरे पास इतने स्ट्रगल हैं. अब उसमें आप बोल रहे हो कि मुझे मेडिटेशन भी निकाल के लिए उसके टू टाइम, पहले मुझे इसको बीट करना है, मुझे यहाँ करना है, मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, मुझे जॉब लेनी है, मुझे पैसा कमाना है, अब मुझे मेडिटेशन भी करना पड़ेगा. बट यही जो है ना, एक्चुअली ये सबसे पहले आना चाहिए, राइट? आपको हाउ डू यू बी प्रेजेंट, हाउ डू यू गिव टाइम टू योर माइंड, टू योर people you love, to the things you love. How do you do that? I think should come at the beginning. वो end नहीं है. You shouldn't be doing it to get all of this. I think you do it first and then you get all of this. This is what I think. एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी मैंने, be present by being a presence. Oh, lovely. That's a very nice line. So that how to make yourself a presence in that moment. ये सब practices है. We were discussing before this about men's mental health, and you are building a great property product around that. Would love to know what's that, and then we Be can a man, yaar. Be a man. So we did something called the Yuvaa Roadshow of Kindness. We called it the Roadshow of Kindness because our intent was to create these safe spaces where young people can express themselves authentically. कि हम आपको हम कह रहे हैं कि हम आपको सुनना चाहते हैं, आपको जो दिल में आ रहा है आप बोलो. तो आप जाके, हम जाके, तो first I want to understand this a bit more, because it's quite fantastic. So you go, आप कॉलेज में जाते हो, आपने ये सेफ स्पेस क्रिएट की, आप खुद आते हो, और फिर आप लोगों को क्या बोलते हो? तो पहले तो मैं अपने बारे में बात करता हूँ. I put my vulnerability out there as an adult. I am very okay with telling them कि मेरी लाइफ में ये हुआ. So it's a talk that I give, and typically that talk would talk about what I have my struggle with mental health.
माई स्ट्रगल विद माई ओन मैस्कुलिनिटी, माई स्ट्रगल विद जब मैं आपके एज में था तो मेरे क्या स्ट्रगल्स थे. तो जिस तरीके से मैं बोलता हूँ, सडनली दे फील दैट ओके देयर इज एन अडल्ट हु इज रेडी टू बी ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ अस, हु इज रेडी टू remove those barriers of pretentiousness in front of us, and that's where the safe space gets created. अगर आपको create करनी safe space, सबसे पहले आपको vulnerable होना पड़ेगा. The moment I become vulnerable, they feel like okay, maybe in front of this crowd and this audience and this person, I could also speak. And of course, we don't say either. We say, आपको जो बोलना बोलो. It's, come on stage, say anything you want. It takes some time. First person, like first 2 minutes, nobody does, and one hand goes up, dhire dhire, and that person comes. And the things that we started hearing, the trends, I don't want to call them trends, but the things that you kept hearing most, when women are given a safe space, the thing that they talk about, unfortunately, in our country is harassment. And any kind of harassment. The harassment could be sexual harassment. It could be harassment for them being harassed because उनकी color जो है ना ज़्यादा fair नहीं है, उनके जो है ना body अभी भी this is the only thing that everyone talks about कि जो है ना because I'm a woman, I don't get to go out much. I don't get to choose what I want to study. मुझे बोला जाता पढ़ाई मत करो, कुकिंग सीखो. मुझे बोलते जाता तुम्हारा कलर नहीं अच्छा है. मुझे बोला जाता तुम ओवरवेट हो, तुम ज़्यादा बात कर रही हो, तुम कम बात कर रही हो, तुम्हें लड़का कैसे मिलेगा. यही, या फिर जो ना कि harassment which is of a sexual nature, unfortunately that happens not only from outside but sometimes from within families. मेरे रिलेटिव ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया कि इसने मुझे ये बोला, somebody told me you can't wear shorts at home because ताई जी आके देखते हैं. ये फिर and they obviously get angry about the fact कि वो क्यों देख रहे हैं मुझे. I mean it's not about me, it's about them, right? But what was beautiful that I started noticing, and over the years it's increased to a big level, that women would also finish their thing by saying, ये हुआ मेरे साथ, but I'm so glad that that girl over there, you see her sitting there, she was with me. This has happened with me, but do you know that, hey, I want to give a shout out to her. अगर वो नहीं होती, मेरी उसने सुनी नहीं होती, I don't think I would have been here today. And then suddenly you would have these couple of girls who run over there on stage, give them a hug, they're both crying, and I'm like, क्या चल रहा है? It's beautiful. The sense of allyship, the sense of sisterhood that exists in young women today is incredible. Now what's happening with men? What you're given is a demonstration of the power of vulnerability. और मतलब आप मेन के बारे में बताइए, लेकिन मुझे उसके बाद थोड़ा जानना है कि आपने बहुत इजीली बता दिया कि you be vulnerable then they will be vulnerable. I want to यार मतलब क्योंकि ये मतलब इजी नहीं है ना. हम लोग के एज में मतलब लड़कों में अगर vulnerable होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा एक वो हो जाता है, मतलब लड़के या तो चिढ़ाने लगते हैं एक दूसरे को, मतलब they don't know how to process that. So our way of dealing with vulnerability is something, at least in my circle or in our circle, is थोड़ा छेड़छाड़ in like that voice poking. लड़कों की लव लैंग्वेज एक दूसरे को हाँ रोस्ट करना, तंग करना, चिढ़ाना, एज यू सेड, समटाइम्स बुली भी करना, रैगिंग करना, ये लव लैंग्वेज है लड़कों की, जहाँ पर उनको लगता है कि दिस इज द वे दैट वी आर गेटिंग टू नो ईच अदर बेटर. But see, that's what I'm saying, when I was listening to boys in our country, and it actually, everything that you're saying is actually why we started Be a Man, यार. जब लड़के आते हैं ना बोलने के लिए, या तो जो है ना वो करियर के बारे में बात करेंगे, that's one of the biggest pressures they have. If they're not talking careers, they're talking about two things. One is love, and the other is loneliness. Loneliness are the people जो वही बात कर पाते हैं जो who have a lot of courage, जो बहुत कामते कामते आते हैं स्टेज पे, कहते हैं मुझे बात करनी है, and they talk about how I don't have anyone, nobody is listening to me. I mean I've had these beautiful, I've had like honest conversations with boys coming and saying कि जो है ना यार, एक ज़माने में ना मेरे फर्स्ट ईयर में ना ये मेरा रूममेट हुआ करता था, and we became friends, and then second year में streams change हो गई और वो चला गया, and I miss him, and these kind of things that you hear, that कि I don't have that guy in my life anymore. I don't think I have enough people in my life anymore. कुछ ये भी बोलते हैं कि अभी हम लोग जब मैंने बोलने की कोशिश की तो मुझे चढ़ाया गया, जैसे बोला. Some people say that I have had heart wrenching moments where after the end of the session कोई लड़का आके मेरे को बोलता है कि sir can I have a hug? I'm like sure, and I give him a hug, and then he's like sir I just want to say मुझे आज तक जिंदगी में किसी ने hug नहीं दिया, and I'm just like you are 21. He's like not a single person in my life has given me a hug right now. There are boys who have said कि मुझे मेरे parents ने आज तक I love you नहीं बोला,
So when you hear these things, you realize, and this what was happening with the girls never happens with the boys. No boy will say कि but because of that boy मैं ठीक हूँ. In fact, there have been classrooms where I've been like, यार, does he have friends? Is there anybody who wants to go up and say something? तब शायद कोई लड़का उठेगा बोलेगा हाँ हाँ I am here for you, don't worry. But जब तक मैं नहीं बोलूँगा कोई बोलेगा ही नहीं है. It's seen as such a maybe like unmanly thing कि यार तुम कैसे support दे सकते हो openly? तुम कैसे बोलो कि मैं हूं तेरे लिए? वो भाई भाई बोलते हैं, yes absolutely, and होता भी है. It's not that boys don't have each other's backs. Of course there are friendships where they have each other's, but when in open spaces when someone is being vulnerable, बहुत मुश्किल होता है लड़कों को बोलना कि मैं भी हूँ. When they talk about love, and I thought a lot कि जो ना यार loneliness पे love क्यों बोलते हैं, and then I started realizing love is the only emotion where it is normal, which has been normalized to talk about for men. सारे गाने प्यार के होते हैं, दिल टूटने के होते हैं, जितने भी आप एपी ढिल्लों से लेकर किसी की भी बात कर लो, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट लव एंड हार्ट ब्रेक एंड लड़की वड़की. दैट इज द ओनली इमोशन बॉयज टॉक अबाउट, एंड बिकॉज दैट्स द ओनली इमोशन दैट बॉयज टॉक अबाउट, दैट इज द ओनली इमोशन इट इज दे फील दे कंफर्टेबल एक्सप्रेसिंग. उसके अलावा फिर वो बोल ही नहीं पाते. तो आपका एक ऑलमोस्ट ये शो एक लैब एक्सपेरिमेंट है कि लड़कों को बताना कि ये सब इमोशन भी बात कर सकते हैं. So Be a Man यार really came out of this idea. When I kept hearing कि यार spaces नहीं है, we don't know, it's not normal, and they would say something on stage and personally और भी बोलते थे. So then I was like कि मैं ये बातें तो कर ही रहा हूँ. See, I'm trying very hard on my Instagram and social, but I have very small presence, right? To talk about these things. But होता क्या है ना, मैंने ये भी notice किया कि मैं जब अपने जो ना struggles की बात करता हूँ या failures की बात करता हूँ या masculinity की बात करता हूँ, most of my comments are from women. They're not from men. Men DM me. लड़के शायद DM करेंगे, बोलेंगे सर आपने वो जो बात कही थी दिल को छू गई. बट लड़कियां ओपनली एक्सप्रेस करेंगी, तो वो भी ना एक साइलो में थोड़ा एक्सप्रेशन होता है. ये ना एक्सप्रेशन, इट्स नॉट दैट दे आर नॉट गेटिंग, it's not that it's not resonating with them. They're afraid of saying this. I was like, how do we get young men, in particular in our country, to recognize that it's okay to have vulnerable conversations? And that's where the chat show came in mind. कि अगर if I get some of the most loved men in this country, if I get Karan Johar, if I get Vicky Kaushal, if I get Zakir Khan, if I get Nasiruddin Shah, if I get Nakul Mehta, if I get Amol Parashar, Naveen Kasturia, all of these incredible men that everybody else in this country looks up to, and उनके साथ अगर हम लोग vulnerable बातें करें, and वो बोले यार कि हाँ मैं भी रोता हूँ, अगर वो बोले कि हाँ यार मेरी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल रहा है. I mean, Zakir has, I was just looking at Zakir's episode in the morning. He has spoken about the difficulty he has had with being dark, and किस तरीके से उसको जज किया गया है, and how किस तरीके से उसने अपने mind को बना के to overcome that. He's spoken beautiful things. Vicky has spoken about depression. He's spoken about how, वो he's needed releases, इमोशनल रिलीजेस, जो उसको ही ओनली गेट्स जब वो कभी पिक्चर देख रहे होते हैं और पिक्चर देखते देखते कोई एक सीन आ गया एंड देन ही ब्रेक्स डाउन, बट द सीन मूव्स ऑन बट ही कांट एंड ही कंटिन्यूज क्राइंग बिकॉज उनको रिलीज नहीं मिलता. So all of these beautiful men have just honestly spoken about their emotion, and I think अगर ऐसी और spaces हम create कर पाए तब शायद हो सकता है. And all of these men जब ये लोग बोलेंगे कि हाँ यार it's okay, तब शायद ना young लोग ये भी बोलेंगे हाँ अगर ये बोल रहा है मेरा favorite actor या मेरा favorite comedian या मेरा favorite director etc, तब शायद it's okay for me to express, and that's really why this show was created. तो वो जो crucible है, जो नहीं मिल रहा है, जो पिक्चर के माध्यम से मिल रहा है, हम वो क्रूसिबल कैसे कल्टिवेट कर सकते हैं लाइफ में. विक्की को अगर जैसे ही इज फीलिंग द नीड टू क्राई इन दैट मूवी, बट सीन चला गया, उनके आंसू नहीं चले गए, व्हाट एल्स कुड ही हैव डन? It's a support system. See, again, unfortunately or fortunately, I don't know, हम लोग ने ये support system ना at least men look for in women, because women are seen as nurturers, they are seen as empathetic. और एक ना हमने वो बना दिया है अपने दिमाग के अंदर ना कि जो ना जब तक मुझे कोई वुमन होल्ड नहीं करती ना तब तक जो ना आई डोंट थिंक आई विल फील सेफ. इट वाज योर मदर हु यूज्ड टू होल्ड यू, नाउ इट माइट बी योर गर्लफ्रेंड, एट सम पॉइंट इट विल बी योर वाइफ, एंड आई नीड टू बी हेल्ड बाय समबडी. एवरीबडी नीड्स टू बी हेल्ड. Men, I saw this incredible video once which said that men have sex not because they need sex, because they need touch. Men are starved of touch. They are starved of intimacy. उनको intimacy नहीं मिलती. कोई दो लड़के हाथ पकड़ लें लोग हंसते हैं,
लड़कियां एक दूसरे को किस कर रही हैं, हग कर रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. दे आर सो फिजिकल विद देयर अफेक्शन. लड़के घबराते हैं यार, मैं हाथ पकड़ लूं लोग क्या सोचेंगे, मुझे जज करेंगे. It's important to have physical emotion. It's important. Why can't boys kiss other boys? There is nothing wrong with that. Yeah? Why is this a joke? You are just expressing emotion. But because we don't get physical touch and we don't get physical intimacy from men, I can't go up to a friend, or I want to, but I may not be able to go up to a male friend of mine and say, "Yaar, I need to be held today. I've had a very tough week. I've had a very tough day. Something very bad happened to me. Can you hold me?" मैं ये लड़के से नहीं बोल पाऊंगा. क्यों? क्यों नहीं बोल पाऊंगा? बोलना चाहिए ना मुझे. Why can't I get a hug from a male friend of mine, but I'm going to be comfortable saying this to a female friend of mine? And that needs to change. We need to create spaces among men to allow for this. कि अगर मैं रोऊं ना तो एक लड़का भी मुझे ना पकड़े और it's not awkward. And अगर ये हम कर पाए ना, I think that's where we will be able to, I think, grow as a gender. Yeah, you know, also this is reminding me of the in the spiritual process, you have, for any human to be complete, you need the divine masculine as well as the divine Correct. feminine. Absolutely. So you are not complete as an individual if you have only power, clarity. You know, let's say with respect to the man, there are certain traits. Men are more focused or have a higher orientation towards delivering clarity, more forceful, more powerful in that context. You know, the woman or the divine feminine is more around compassion, around empathy, you know, around being able to be a crucible in which you can fit. And but the human being is a combination of both. Absolutely. Whether you are a man or a woman, in proportion you may vary slightly, but you are a combination of both. So I think it's a great initiative that you're taking, which is somewhere edging us towards becoming more complete human beings. But that is, you know, yin yang. जाकिर भाई ने भी बोलता है कि ना सबके अंदर एक शिव होता है, एक पार्वती होती है. You know, you need to tap into either of them depending on where you are in your life. You know, and वो सबके लिए important होता है यार. And we are trying with this show to say कि यार it's okay to be any kind of a man. कि ये there is no such thing कि मुझे ऐसे ही आदमी बनना है. Be a man यार. We are trying to reclaim that. हमेशा जब बोला जाता है ना be a man, बोला जाता है कि तुम strong बनो, express मत करो, तुम रो मत, be a man, be a man. हम कह रहे हैं be a man यार. Emotion दिखाओ, कोई चक्कर नहीं है यार. It's completely fine. Sit with your friends and say I love you. There is, I'll show you this trailer. You know, in the show I've told Nakul I love you, he's told me I love you. In the show, like Vicky and I've hugged each other. In the show I've got an emotional Sushant Divgikar and I've cried, you know, and it's fine. You know, Karan Johar has spoken about the intense bullying he faced as a child, you know, and how much it affected him. He's spoken about what when he was called pansy as a kid, what that meant for him and how he's overcome those things, you know. And I think these are important things, you know, for us. Let's reclaim this idea. Har insan, any kind of a man is okay as long as you're a good human being. That's what I believe. That yaar word has a soft touch, has a very soft aftertaste which makes the entire line very nice. यार अगर लड़कों को भी देखे तो आई फील दो कैटेगरी दिख रहे हैं मुझे. मतलब एक है जिनके फ्रेंड्स हैं, 3-4 फ्रेंड्स हैं, और एक है जिसके फ्रेंड्स नहीं है, मेल फ्रेंड्स नहीं है. ठीक है, जो जिनके फ्रेंड्स हैं और उसके लाइफ में ब्रेकअप हुआ या कुछ हुआ, वो जाके अल्कोहल पी के, लड़ाई करके, कुछ करके दे विल मैनेज. बट दिस सेक्टर जिनके फ्रेंड्स ही नहीं है, इट्स अ वेरी टफ जर्नी फॉर देम. मतलब and I think both will have a different problems to solve. And यार मैं वही कहता हूँ, दोस्त हम कोशिश करते हैं बनाने की by being the first people to speak. कि मुझे कुछ बोलना है, मुझे एक दोस्त चाहिए. अगर थोड़ा हम उल्टा खेले ना और हम बोले मुझे किसी को सुनना है, अपने आप दोस्त बन जाएगा. बहुत सिंपल होता है. अगर आप बोलने से पहले ना सुनने की कोशिश करो, that's where you make friends. आप आयुष को, मैं अगर आयुष के पास जाके बोलूँगा यार तू बता ना तेरा क्या चल रहा है, हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, व्हेन यू एक्सप्रेस टू मी ना, यू आर लाइक यार इसने मुझे सुनना है. अब निखिल तेरे पास कुछ है बोलने को ना, बता ना मुझे, बिकॉज आई हर्ड यू फर्स्ट. बट इफ आई गो टू आयुष एंड से आयुष मेरे लिए बहुत फाइट चल रहा है, तू आ रहा बैठना मेरे साथ, आई वांट टू एक्सप्रेस. नाउ आयुष माइट हैव हिज ओन स्ट्रेसेस, आयुष माइट बी डूइंग 100 अदर थिंग्स एंड सेइंग हाँ मतलब मैं 5 मिनट बैठ सकता हूँ बट शायद 5 घंटे नहीं बैठ सकता अभी, बिकॉज आई डोंट नो यू दैट वेल. एंड दैट्स वेयर आई थिंक वी सब फंस जाते हैं. हम सब कुछ बोलना चाहते हैं, बट हम अगर सुनने वाले पहले बन जाए ना तो हमको भी सुनने वाले बहुत मिल जाएंगे. इट्स अ बिग सर्विस जब भी आप किसी की बात सुनते हो, बिकॉज व्हेन यू आर लिसनिंग टू समबडी, आप यू आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी कि वो खुद को अपने आप पहचान सकता है. You know, Vicky said this thing. It's so at the end of
episode, Vicky is like, यार निखिल मुझे जो है ना, मैं यहाँ इसीलिए आना चाहता था बिकॉज मुझे लगता है मैं ये बात ही नहीं कर पाता, ये बातें मैं किसी से करना चाहता हूँ बट मेरे से कोई बातें करता ही नहीं है. And he's like, now I'm so glad I came because I was able to learn something about me today. Because I'm not able to have these conversations, and it's important we have this. Why is Vicky, who is one of the most successful men in our country, forget actors, one of the most successful men in the country, he has as many people around him as possible. अगर वो ये बात नहीं कर पा रहा तो आपको पता है यार, there's a problem there. You know, he should be able to express this to anybody at any point of time, but नहीं होता है. And it's so right. Like, you know, this couple of months back, I was preparing for a talk. Yeah. So the gentleman at the other end who was asking me the questions, so far in a lot of my discussions, I would have put that when I was stressed working earlier, I was used to run another company before this, and when I was stressed, I was taking a lot of the load on that company, and when I was stressed, I went into first went into smoking hash, smoking weed, and then to hash. And what happened is that I realized that I would always tell my story as I went into smoking weed, but actually before that, and then the reason for me to smoke weed was given as ki you taste the weed, you have the weed because the food will taste better. But I also realized that actually I was using food also as a coping mechanism before that. So the food was a coping mechanism. उसकी वजह से किसी ने देखा कि मैं तुझे weed दे दूंगा. Weed then became a coping mechanism. हाँ, फिर उसने बोला कि अरे weed से तो बहुत ये भंड आय होता है तो तू ये hash ले ले because वो एक बहुत refined है, शिव जी का प्रसाद है ये वो, मतलब. और फिर 2 साल आप उसमें अटक गए. मैं 3 साल निकलने की कोशिश कर रहा था, निकल नहीं पाया. और एक एडिक्शन ऐसी चीज़ होती है. सो आई थिंक द लिंकेज ऑफ listening has so many benefits. It can save you from, actually if you're listening to somebody, you might be saving them from addiction. You might be saving them from that need to. I also feel, also yourself. मुझे लग रहा है कि हम अगर, यार होता क्या ना, मुझे I feel very strongly कि अगर मैं आपको सुन रहा हूँ ना, there is something in your story that I am also resonating with. मुझे भी लग रहा है जब अगर आपने इतनी ऑनेस्टी कुछ बोला, मुझे भी लगा यार हाँ मेरा भी तो ये कोपिंग मैकेनिज्म था. अगर आप अपनी बात कर पा रहे हो और मैं जेन्युइनली सुन रहा हूँ, मुझे भी समझ आ रहा है कि मैंने शायद क्या गलती की है, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड दैट्स वेयर कॉन्वर्सेशंस हैपन. दैट्स वेयर अगेन ह्यूमन कनेक्शन हैपेंस. आपने कुछ वल्नरेबल बोला, मैंने सुना, मैंने कहा यार अच्छा हर्षिल का ये था क्या, एंड देन आई स्टार्ट थिंकिंग टू मेरे साथ क्या था एंड हाउ आई डिड नॉट हैव एनीबॉडी टू टेल मी एट दिस पॉइंट. And then I'll tell you about that. यार मेरा ये coping mechanism था. And then you'll be like, यार I wish we had someone to talk to at that point of time. And now that we do, we talk about other things. And and that's where friendship happens. That's where relationships are built. So I feel like अगर आप किसी को सुन रहे हो ना, आप अपने आप को भी जो है ना, you're giving yourself also perspective. It's not just the other person that you're helping. It's not I love that you're calling it service. And I do think in some ways, yes it is. But it's a service also to yourself. नेट क्या हो रहा है कि वो द नीड टू स्पीक इज नॉट देयर. मतलब मैं भूल ही गया हूँ कि मुझे बोलना है. मतलब वो मैं भूल ही गया हूँ कि मुझे बोलना था. ये बहुत आपने जो बोला ना आयुष अभी कि आप भूल ही गए, यार याद ही नहीं रहता ना आदमियों को. पता है मैं ना, एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग, आई हैव अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. आई मीन आई हैव ऑलवेज बीन द लिसनर एंड अब मैं बोल रहा हूँ कि जो ना मुझे भी इंपॉर्टेंट है, इट्स इंपॉर्टेंट. पहले मैं बोलता था काइंडनेस टू एवरीबडी, आई वाज से लिसन टू एवरीबडी, बट मैं खुद भूल जाता था कि I also need that compassion and you need to be kind to yourself also. There was a friend of mine, very dear friend of mine, who we became very close. मैं उसकी सारी बातें सुनता था उसकी लाइफ में. There was something going on in his life. And one day he just after friendship of 1.5 years, he's just like, Nikhil, yaar, I don't like this friendship. I was like, क्यों? He's like, तू कुछ बोलता ही नहीं है. I don't have anything, I don't know anything about you. I also want to listen to you. And then I was like, यार ऐसा कुछ है नहीं बोलने को. And he's like, कैसे हो सकता है? मेरे पास इतना कुछ है तेरे बोलने को, तेरे पास कुछ नहीं बोलने को. He's like, I want you to know कि मैं भी सुनना चाहता हूँ, And I was like, okay. तो उस टाइम तो मैंने कुछ नहीं बोला. फिर बाद में लगा यार बात तो सही है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं उसको अपने बारे में. And when somebody genuinely offered that space to me, saying you've always been there for me, I also want to be there for you, man. You're my friend. And that made me so emotional because then I started telling him. He became one of my dearest friends, and because I started expressing to him,
कि ये चल रहा है लाइफ में। फिर उसके बाद तो हमारा दोस्ती ट्रॉमा एक्सचेंज हो गया। ये मेरी लाइफ में चल रहा है, तेरी लाइफ में चल रहा है, दोनों की लाइफ इज फक्ड, बट बॉन्डिंग ओवर ट्रॉमा। या बट इट्स ब्यूटीफुल टू हैव दैट इन योर लाइफ। जो हम ना ऐसे, जैसे हमने बोला, भूल जाते हैं यार लड़के कि यार बात भी करनी होती है हमको, सिर्फ ये जो ना कि काम ही नहीं करना होता। हमारे लड़के तो सुनते भी कम है बट बोलते तो बिल्कुल ही नहीं है, तो दोनों ही है। और जब बोलते हैं सिर्फ जो ना, इट्स ऑलवेज अबाउट मैंने क्या अचीव किया, मैंने क्या कूल चीज की, वही बात हो रही होती है हमेशा। इट्स अबाउट एजेंडा। स्टॉप दैट, टॉक अबाउट योर ह्यूमन सेल्फ, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट्स द अमेजिंग थिंग आपके बारे में कि आपने लाइफ को इतनी अच्छी तरह से देखा है। मतलब अगर एक आदमी, आई थिंक वी डिडंट गेट टू दैट पार्ट कि आप लोगों को कैसे ओपन अप कराते हो, बट अगर आप परमिशन दे तो मैं एक बार आपके साथ आना चाहता हूँ, इन द ऑडियंस बैठना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक आर्ट है आपका कि आप कैसे लोगों को ओपन अप करवाते हो और फिर एक कनेक्शन बनवाते हो, और अपनी कितनी गहराई से आपने लाइफ को देखा है। और आप जब भी बात कर रहे थे लड़कियों के बारे में कि ये प्रॉब्लम्स है, लड़कों के बारे में ये प्रॉब्लम्स, मुझे सच्ची में वो फीलिंग आ रही थी कि आप जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हो आपने उनको अच्छी तरह से महसूस किए और इसीलिए आप बता सके। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये यहाँ से नहीं बोल रहे, यहाँ से आ रहा है। हाँ, पुप तो हाँ, बीच में काफी चीजें थी, दिल से आ रहा यहाँ है, से आ गया। और वो दिल की चीजें सुनाई दे देती है अलग से। तो मुझे बस इतना ही लगता है कि यार वी नीड टू सी ईच अदर ट्रूली, हम लोगों को, आई फील हम इंसानों को, एक दूसरे को ना अब सिर्फ डेजिग्नेशंस में देखते हैं या लेबल्स में देखते हैं, या एक जो सबसे ऑब्वियस चीज़ है ना वहीं पर हम उसको जज करते हैं, उसी तरीके से बात करते हैं। बट अब अगर एक दूसरे को जेन्युइनली एज पीपल, एज इंसान, एक कहानियों जैसे देना शुरू कर दें, कुछ it will change everything, I feel, and it has changed so much in my life. मैं बोल रहा हूँ मेरी जिंदगी का most beautiful, I have learned so much more from my students than I have learned from anyone, because I saw them and they saw me, and the 7 years that I've spent teaching has been the most beautiful growth that I've seen in myself as a human being, because वो जो space ना जो शायद मैंने शुरू करनी थी create की, but सबने उस space को trust किया है। Like sometimes people ask me कि आपने you do this and बाद में जाके कोई ना स्टोरी किसी ने बता दी, बाद में जाके someone misuses it. Not once. I have now been to 150 campuses. इनफैक्ट मेरे से उल्टा होता है कि जहाँ पर ना एक देर कैंपस है जहाँ पर डीन्स और प्रिंसिपल्स आके बैठे हैं और उन्होंने मेरे को बाद में ईमेल किया है कि यार थैंक यू, मुझे अपने स्टूडेंट के बारे में कुछ सीखने को मिला आज। आई थिंक आई नीड टू बी अ बेटर प्रिंसिपल. These are the things that you hear when people are vulnerable. Very rarely do you have people, and in my experience, I've not seen anybody who will misuse that information. So, just look at each other as people. I think that's what it is. It's not something big. I think, these things, ये लगता है बड़ी चीज़ें क्योंकि हम करते नहीं हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मुझे लगता है. Very interesting कि in the process have trust कि it will not be misused. कि we don't know how information can be used. To have that courage कि express करो, it has more upside than the downside, and net it will be beneficial for you. आज का जो ये कॉन्वर्सेशन था काफ़ी इंटरेस्टिंग था. की टेकआउट्स जो मेरे लिए थे कि भगवान ने 2 कान दिए, अच्छे सुनो, 2 आँख दिए, अच्छे से देखो, और कम थोड़ा ज़्यादा मतलब रिलेटिव रेशियो में बोलो, तो अपने सेंस ऑर्गन को उसी रेशियो में यूज़ करो जिस रेशियो में भगवान ने दिया है. और मेन की दोस्ती के बारे में हमने बात किया, मेन का हाउ दे डील विद मेंटल थिंग्स वी डिस्कस्ड. स्टेप 1 उसका ये कि एक्सप्रेस करो एंड लेट्स सी आगे क्या होता है, बट स्टार्ट एक्सप्रेसिंग. सो ये काफ़ी की टेकआउट था आज के पॉडकास्ट के लिए, विच वॉज वेरी वेरी फ्रेश एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. इफ़ यू हैव एनी लाइक 2 or 3 मैसेज that you want the viewer to carry forward? Yeah, मैं ना अब एक ही मैसेज देने लग गया हूँ. If at all there is a message, I don't even think that, I think सबको खुद के अपने ढूंढने चाहिए. सबके लिए अलग चीज़ें होती हैं. पर मैं जो बोलने लग गया हूँ अपने आप को भी बाकियों को भी, is to kindness begins at home. पहले सबसे पहले ना तुम जितना भी ना दूसरों की बात करें ना, सबसे पहले ना अपने आप को भी ना कंपैशन दिखाओ, काइंडनेस दिखाओ. We always look at others, we always, even when service, it's always about others. Try a little bit to be kinder to your mind, to your body, to your emotions, to your heart.
you know, if you're able to express, that's beautiful. If you're not able to express also, it's fine. You know, you will. कोशिश करो. Don't be hard on yourself. I see so many young boys and girls, all genders at this point, सब इतने प्रेशर में, इतने अपसेट एक दूसरे के साथ, अपने साथ, कि मैं ये कर नहीं पा रही, etc etc. But that's not the way. I think just allow yourself the time to feel, allow yourself the space to feel, allow yourself, you know, to do that struggle, you know, and learn something from it, and then you will grow. But be compassionate to yourself. अगर वो नहीं कर पा रहे ना हम, I think सबसे ज़्यादा, you know, it's a very very big, I think, issue right now. I'm learning. I don't think I've been compassionate to myself for a very long time. I'm now learning at a very, I mean, much later in life, but I would advise everyone to try and learn it much sooner than I am. Very interesting. Maybe one CTA can be a calendar invite खुद को भेज दो weekly. Me time, me compassion time, me kindness time, hashtag level supermind time. You can do that. बहुत अच्छा idea है. I think that would help, क्योंकि ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, भगवान करके नहीं देंगे. तो schedule it in the calendar. We had great time talking to you. It's heart-to-heart conversation. Thank you for coming. Same here. Thanks, Harshal. Thank you for everything that you're doing with the app. I think बहुत important है यार for young people to, at an early stage in their life, learn these skill sets. So thank you for working on this.